Hello everyone, welcome back to my channel. I am Nikita Baheti, a company secretary with certification in SAP FI. So I was teaching you about key documents an FI consultant prepares in SAP. So let's dive in the remaining key documents. Now the next document is unit test document. Unit test document, as I have mentioned before, is a document which is specific to one module. ठीक है? जब हम नॉर्मल एपी करते हैं अकाउंट पेबल का कॉन्फ़िगरेशंस करें और वी डू अकाउंट रिसीवेबल APP cash journal, so this all are individual configurations which are done. They are not reliable on other module, just like P2P, unlike P2P, because I have even mentioned like what is integration test document, the testing which is dependent on two module, right? अगर हम एक individual module पे ही टेस्ट करना है, as is finance, so if हमारी टेस्टिंग सिर्फ हमारे तक ही सीमित है और हमें किसी और कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना है टू मेक दैट टेस्ट रन सक्सेसफुली, तो वो क्या है, यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी टेस्टिंग है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस है जो दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, जैसे कि P2P हो गया, प्रोक्योरमेंट टू पे या ऑर्डर टू कैश, इसमें क्या है ना, हम दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने P2P में आपको बताया था कि जैसे उसमें क्या होता है, एक साइकिल होता है, राइट, बट वेयर द इन्वॉल्वमेंट कम्स फ्रॉम परचेज ऑर्डर से अकाउंटिंग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज क्रिएट हो, मतलब इट गेट्स रिकॉर्डेड। सो परचेज ऑर्डर होगा, फिर हम गुड्स रिसीट्स करेंगे, फिर इनवॉइस रिसीट्स होगा और फिर फाइनली इनवॉइस का पेमेंट होगा। तो ये दो जो है ना, ये उसमें एमएम कंसल्टेंट का वर्क है एंड ये दो में फाइनेंस कंसल्टेंट एफआई कंसल्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये पूरे P2P को सक्सेसफुल रन करने के लिए हम दोनों को ही एट इट सेम टाइम नियर अबाउट कंप्लीट करना होगा, राइट। सो जब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग हो जिसपे दो मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो, तो उसे हम इंटीग्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि सी व्हेन वी आर इनटू ए प्रोजेक्ट, डेली एक स्टेटस रिव्यू मीटिंग किया जाता है एंड इन दिस मीटिंग consultant from every module sits together and the project manager generally wants to know the status कि हर मॉड्यूल्स में अपने अपने पार्ट के कितने कितने, मतलब उनका वर्क कहाँ तक पहुंचा है, कितने कॉन्फ़िगरेशंस उन्होंने कर लिए, व्हाट आर द पेंडिंग वर्क एंड उनका स्टेटस क्या है, आर द कॉन्फ़िगरेशंस इज रनिंग सक्सेसफुली। सो ये एक डेली स्टेटस रिव्यू मीटिंग is required, or I should say or present you in this way, that every organization has their like a particular project, and for know the status of that particular project, daily status review meeting from each module consultant is very much important, right? So know कि वो अपने target के कितने करीब है। So this is what we mean by unit test डॉक्यूमेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट में क्या, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हमने टेस्टिंग कर लिया तो इट्स ओके, if we have done the testing we have to show it to the higher level, right? Not too much higher, like if you are a junior consultant and we are doing the testings and all, then we have to show it to our senior consultant, or we have to show it to the project manager कि हमने ये configurations किए थे, according to that we have processed our testing and see this is the result। जो भी हमारा हमें टेस्टिंग से हमें जो एक रिजल्ट चाहिए, दैट इज सक्सेसफुल, बट दैट इज सक्सेसफुल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू।
we have to get it approved even from our higher manager. So हम क्या करते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर करते हैं ना, we because such documents is required for internal reporting only. ऐसा तो नहीं है कि हमें अपने क्लाइंट को ये दिखाना होता है कि हमने क्या क्या टेस्टिंग किया है, वो टेस्टिंग का क्या आउटपुट निकला। नो, जस्ट सो दैट हमारे जो हर रिव्यू मीटिंग में जब हमें अपना स्टेटस बताना होता है, देयर शुड बी समथिंग ना टू शो इट टू द हायर मैनेजर। सो यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट भी इट जस्ट दैट जो भी टेस्टिंग करते हैं ना कंसल्टेंट, वो अपने अकॉर्डिंग जस्ट कि whether it be in the word format or in any other format to for, make the senior consultant or the project manager know कि जो वर्क वो कर रहे हैं वो कहाँ तक प्रोसीड हुआ है एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, राइट? सो आई विल शो यू द सैंपल ऑफ ए यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट। इट्स नॉट कि सैंपल यही इट्स ए स्टैंडर्ड सैंपल, नो इट्स नॉट। क्या होता है ना, सब अपने अकॉर्डिंग देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स ऑफ इट, so you can customize even such unit test document and integration test document templates according to your requirement. And because इसमें ये internally ही यूज किया जाता है ना, तो we can adjust it the way we want to. We can put the writings the way we want it to be presented before our seniors, right? वो हमारे हम because वो हम हमें प्रेजेंट करना है, तो हम हमें जितना हम हमें लगेगा जितने इजी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, we will try to do it. And if there are someone who wants to showcase in a very like a fancy manner, they can do it in that way. So because there is no hard and fast rule that there is a like a standard like format or standard template which we need to follow. No, it's not like that, because it, as told, it is just for internal reporting. So let me take you to one of the example. मैंने ये just एक brief दिया है कि कैसे एक unit test document दिखेगा. It's you can anytime you can change the words, you can change the settings, you can change the format, you can make it more presentable. Just to give you all a brief idea कि क्या unit test document looks like, ठीक है? So say we have to create a vendor master data creation, ठीक है? We have to do the testing for this. So क्या होगा? We will first in the Word document or whichever file you want to show it, there will be like document title. The title of the document is what? Account payable. As we are talking about vendor master data, so vendor is what? Vendor कौन है? जिनसे हमने goods purchase किया है, and we have to pay the amount to that individual or to the client, right? Or to the firm or to the company. So they are our vendor. They are जिसे हमें पे करना है. Pay itself means account payable, right? Account payable is no क्या है कि account payable is our शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एक करेंट लाइबिलिटी जो हमें जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमें अपने वेंडर को पे करना होता है. So this is what do we mean by account payable. So vendor is always related as a payable, right? So the document title will be what? As account payable. It's a unit test document and we have to create the vendor master data. Now let me clear you. I know कि आप many of the terms will be new to you. Like master data क्या होता है? What I am talking about this account payable vendor master data. This all will come into picture. ये सब कुछ ही पढ़ाया जाएगा in the coming days. But just आप बस ये समझ लो कि एक आइडिया ले लो कि कैसे एक यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख सकता है, right? So I have to create a vendor master data, so the document title will be vendor master creation. ठीक है? Now, what will be the version of it? Say the version is first because हमने पहला ही start किया है. We will insert the date. It will be tested by what?
if say I'm a consultant and I have done the configuration and testing, it will be tested by me and it will be reviewed by my senior manager, right? Senior consultant project manager. What is the objective? The objective of this document is to outline the test cases and procedure for validating the creation of vendor master data. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा एक परफेक्ट तरीके से वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट हो जाए, ठीक है. दिस यूनिट टेस्ट कवर द फंक्शनैलिटी ऑफ क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा, ठीक है. नाउ we have to mention like in what system we are working into. So once I will start doing the configurations, you will come to know the interface of SAP. जो जो सर्वर है ना, जब हम उस पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट लुक्स लाइक. सो द सिस्टम नेम विल बी डेफिनेटली SAP and ECC is what एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बहुत सारे वर्जन्स है लाइक 4.7 6.0. तो आई विल बी टीचिंग यू ऑन 6.0. so you have to mention the system name, the client, even the client, because जब आप कोई सिस्टम में काम करते हो ना तो there is a server name, there is a client server name. It could be like 100, 200, 800. It all depends कि आप कौन से clientele में काम कर रहे हो. You will also come across with this terminology in future as well with detailed explanation. But एक बार जब आप interface खुद भी जब when you will start doing the configurations now, you will see on the interface itself कि there is a client and some number has been written on it. ठीक है? So this we have to mention the client number. It is generally 3-digit number. Yeah. Now the module. What will be the module? Since we are the finance consultant, so FI module and the sub module like the topic is account payable, right? And we have to even like we have to insert the data. What all data we have to insert in order to create vendor master data is like we have to write down on the while creating the vendor master data, we have to give the company code. We have to even mention कि कौन सा GL हम use कर रहे हैं, the debit and credit GL. Again I am telling you ये GL का concept भी I will let you know in coming classes. ठीक है. तो अगर हम सपोज कुछ चीजें परचेज करते, so what will be the entry? Purchase account debit to vendor account. So what will be the GL? GL is what? Purchase account. ठीक है. And what will be the debit? What will be the credit? Vendor account. हमने कोई सामान लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड वेंडर कौन है? वेंडर हमारी लाइबिलिटी है. वी हैव टू क्रेडिट आवर लाइबिलिटी, राइट. सो हम परचेज को डेबिट करेंगे तो परचेज इसमें जीएल कौन कौन से है? एक परचेज है और एक वेंडर है. ठीक है. वेंडर इज लाइक we named it as account payable. This will I will you will not get to know now. When I will teach the creation of GL account, उस वक्त आपको समझ में आएगा. बट आप ये समझ लो कि इसमें कौन कौन से एंट्रीज है. डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज बहुत दोनों है. तो डेफिनेटली जब हम वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे ना तो हमें ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देना होगा. वी हैव टू गिव the entire information and also the document number generated. क्या होगा ना, when the entry is successful, so a number is generated, whether we can call it as transaction number also or document number also, and it is generally a 10-digit number. But 10-digit number by default it's get generated once you post any transaction successfully. So these are the inputs which we have to insert for creating vendor master data. ठीक है. अब क्या है, देखो वेंडर मास्टर डेटा जब हम क्रिएट करते हैं ना, दो चीज बहुत जरूरी होता है while creating vendor master data कि फर्स्ट वी हैव टू गिव सम इनपुट, राइट. सो वो इनपुट क्या होगा? एक तो कंपनी का कोड होगा एंड एक अकाउंट ग्रुप होता है. आफ्टर गिविंग दिस टू वी कैन क्रिएट वेंडर मास्टर डेटा. ठीक है. आई कैन रियली अश्योर इट कि इफ यू आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद ही समझ आ रहा होगा. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट जस्ट आप एक व्यू पॉइंट ले लो, एक आइडिया ले लो.
जब आप आगे के क्लासेस देखोगे ना, आई एम 101% sure कि if you come again to this video, everything will be crisp and clear. राइट सो अब हम है ना फिर क्या करते हैं ये सब लिखने के बाद हम एक टेबल बना के वेर वी कैन मेंटेन ए टेबल राइट वेर वी कैन गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल नाउ सी हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर क्या हुआ ना जब टेस्ट पे हम क्या कर सकते हैं टू शो इट टू आवर सीनियर कि कैसे क्या क्या हुआ तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर हम कोई चीज टेबुलर फॉर्मेट में दिखाए राइट इट विल बी इजी फॉर अस टू ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड एंड दे कैन ऑल्सो आफ्टर लुकिंग एट द टेबल इट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एज वेल सो ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि मैं आपके सामने ये फिल करती हूँ चलो से कि हमने वो मास्टर डेटा क्रिएट किया वी हैव डन द टेस्टिंग सो द टेस्ट आईडी there can be many other like rows as well with different category just मैंने कुछ एक दो कैटेगरीज मेंशन किए हैं कि दिस इज हाउ वी कैन make the unit test document look like so say the test case id I mention as account payable ठीक है ये टेस्ट केस है एंड से द वर्जन इज लाइक 01 ठीक है डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिख सकते लाइक क्रिएशन ऑफ vendor master data. Okay, I'm just writing the short form. Now, is there any preconditions for creating this vendor master data? Precondition is as such there is nothing, but definitely we have to have company code and account group as well in order to create this vendor master data. Okay. Now, what are the steps? For the first step is we have to create vendor master data through a transaction code. ठीक है वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए यहाँ एक ट्रांजैक्शन कोड होता है SK01 थ्रू विच जब हम ये ट्रांजैक्शन कोड लिखेंगे ना देयर विल बी ए page open where it asks for company code and account group फिर हम वहां पे अपना company code and account group डालेंगे and hence forward it will ask for vendor detail vendor name vendor address vendor के कोई contact person vendor के bank details you will come to know all about all this ठीक है and finally a vendor master data will be created ठीक है so we have to go like through the transaction code SK01 and we have to fill the necessary details whatever it asks for and finally क्या होगा vendor master data create हो जाएगा we have to save and after saving it the vendor master data will be created and what will be the expected result as I told you once the transaction is posted or once the configuration is successful and we save it a 10-digit transaction or document number is generated, right? And what will be after all this? Even what will be the actual result? We can means after the proper execution, we can take either we can write mention it again or we can take the screenshot and we can paste it over here. Just to show that yes, we have done the configuration and we have done the testing and it has been successful. So we can show it to the project manager or any senior consultant. They will approve it, they will sign it, and it's a final testing which has been done. So this is all about unit test document. I am very sure कि एक आइडिया मिल गया होगा how the test document looks like. Yeah. Now come to the next step, which is integration test document. As I told you, integration test document is where two modules are involved. As P2P, in P2P, procurement to pay, there is involvement of and FI, and in order to cash, there is involvement of FI and SD. इसका भी चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ठीक है से P2P इंटीग्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट सपोज हमें P2P का ही इंटीग्रेशन करना है तो सेम हम वैसे ही अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे द डॉक्यूमेंट टाइटल विल बी P2P इंटीग्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट द वर्जन डेट रिव्यूड अप्रूव्ड बाय
ठीक है। ये जैसे हमने पहले बताया था यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट का, सेम वैसे ही होने वाला है। इसमें क्लाइंट का, इसमें दोनों साइड के होंगे। इसमें एमएम वाले मॉड्यूल्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी कंसल्टेंट का लाइक परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसिप्ट्स का जो कॉन्फ़िगरेशंस है, those will done by consultant, and हमारा जो है FI consultant will do the invoice receipts and invoice posting and payment, right? So invoice posting and invoice payment, so दोनों का हम involvement लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें भी चलिए let's start कि अब P2P में हमने जैसे बताया ना कि क्या होता है, फर्स्ट होता है परचेज ऑर्डर, फिर होता है गुड्स रिसीट्स, फिर होता है इनवॉइस रिसीट्स एंड फिर होता है इनवॉइस का पेमेंट करना। तो अब इसी को हम अगर डॉक्यूमेंट करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। से द फर्स्ट इज व्हाट, परचेज ऑर्डर। ठीक है, सो वी गिव दैट से टेस्ट केस आईडी P2P। ठीक है, केस आईडी हम P2P लिख देते हैं, टेस्ट केस एंड इसका भी हम 01। इट्स नॉट नेसेसरी हम 01 ही लिखे, आपको जो भी अपना आईडी whichever is being followed और आपको जो सही लगता है which is easy to remember, you can just write down, it is just for your knowledge, right? Description क्या होगा, we have to create the purchase order, right? Now what are the precondition? Precondition ये है कि pre-requisition approval होना पड़ेगा। There is, as I told, कि ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इट क्या कोई भी चीज P2P साइकिल क्या सीधा परचेज ऑर्डर से स्टार्ट हो जाएगा? नो, प्रायर टू दैट देयर आर वेरियस थिंग, अदर थिंग्स विच आर डन। कोटेशन लिया जाता है, कोटेशन का अप्रूवल होता है, राइट? देयर इज अ परचेज रिक्विजिशन, देन परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल, देन देयर इज द कोटेशन, परचेज कोटेशन, देन देयर इज द कोटेशन अप्रूवल एंड देन परचेज ऑर्डर होता है। ठीक है, सो ये एक कंप्लीट एक पूरा अलग से ही एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में डेफिनेटली ये कवर अप किया जाएगा। बट अभी आपको मैं ये बोल रही हूँ कि इसके प्री कंडीशंस क्या है, कि परचेज रिक्विजिशंस शुड एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज ऐसा नहीं है कि परचेज ऑर्डर से स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले भी काफी रिक्विजिशंस और कोटेशंस लिए जाते हैं एंड फाइनली हम चूज करते हैं कि कौन से वेंडर से हमें सही कोटेशन मिल रहा है और हम फिर उस वेंडर को अपना अपना कोटेशन, उनका कोटेशन हम अप्रूव करते हैं एंड देन वी टाई अप विद दोज वेंडर्स, राइट? सो दिस इज द प्री कंडीशंस व्हिच इज परचेज रिक्विजिशन एग्जिस्ट। नाउ टेस्टिंग के लिए क्या करना होगा, first everything starts with say either we can follow the path, ठीक है, या हम ट्रांजैक्शन कोड फॉलो कर सकते। देयर इज ए ट्रांजैक्शन कोड फॉर एवरी, मतलब ट्रांजैक्शंस और कॉन्फ़िगरेशंस रादर आई शुड से। तो अब हमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, सो द ट्रांजैक्शन कोड इज व्हाट, द ट्रांजैक्शन कोड इज ME21N। सो हम इस ट्रांजैक्शन कोड से फर्स्ट हम पहला स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। फिर सेकेंड विल बी, वी विल पुट एंटायर लाइक जो भी डिटेल है which it asks for purchase order। जब हम purchase order create करते हैं, it asks the informations about the material type, material master क्या create किया है, plant location, storage location, so we will fill entire detail of it and finally we will save it। After saving it, what is expected, that a transaction, a purchase order number will be generated, ठीक है। If we create a purchase order, so what will be, we will see a purchase order has been created successfully, we will get this information with the PO number, ठीक है। Finally, actual result, whatever executions we have done, either we can elaborate it or we can even post the screenshot of the execution, ठीक है। Now, after the purchase order, what is the next thing? The next thing is good receipts, ठीक है। Good receipts में आप वापस से हम चलिए केस आईडी ले लेते P2P, ठीक है, टेस्ट केस, अब वर्जन 02, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वी हैव टू वेरीफाई द गुड्स रिसीट्स प्रोसेस फॉर आवर परचेज ऑर्डर।
क्योंकि गुड्स परचेज ऑर्डर हमने हमारा क्रिएट हो गया। अब उस परचेज ऑर्डर को हम वेंडर को भेजेंगे और वेंडर हमें क्या देंगे उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे, वो हमें गुड्स सप्लाई करेंगे। तो गुड्स फाइनली गुड्स रिसीव्ड होगा। प्री कंडीशन क्या है कि वो किस बेसिस पे हमें गुड्स देंगे, परचेज ऑर्डर के बेसिस पे गुड्स देंगे, राइट। एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गुड्स रिसीट्स आर अगेन with the transaction code. The transaction code is what? The transaction code is मीगो, MIGO, ठीक है, मीगो। एंड वी हैव टू एंटर द परचेज ऑर्डर नंबर। अब जब आप है ना गुड रिसीट्स पोस्ट करोगे ना, गुड रिसीट्स इज ऑलवेज पोस्ट अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर नंबर। कौन सा ऑर्डर परचेज ऑर्डर नंबर? जो हमने पहले जब परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था ना, और इस वक्त जो परचेज ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ था ना, यही परचेज ऑर्डर नंबर हमें इस ट्रांजैक्शन कोड इस ट्रांजैक्शन कोड के बाद हमें डालना है। ये ट्रांजैक्शन कोड हम जब डालेंगे तो हमारा गुड्स रिसीट्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे हमें एक परचेज ऑर्डर नंबर अपना डालना होगा। वी हैव टू एंटर द परचेज ऑर्डर नंबर एंड देन वी हैव टू पोस्ट द गुड्स रिसीट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनली। अब गुड रिसीट्स में there will be the verification of the stock level and also the accounting entry generation. Now, what will be that accounting entry? That we will learn it later in the later classes, but accounting entry and document will be generated. So, what is the expected result? That the good receipt has been posted successfully and also the stock label has been updated. इसका क्या मतलब है कि अगर हमने कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट किया कि हमें 4 आइटम्स चाहिए, तो हमें गुड्स रिसीट्स हो गया उतने ही 4 आइटम का, तो फाइनली हमारे अकाउंट में स्टॉक कितने का है? 4 है ना, 4 क्वांटिटी। सो डेफिनेटली द स्टॉक लेवल हैज बीन अपडेटेड, right? Again, if next time we give the purchase order of 8 item and good receipts again हम create करते हैं 8 item से, तो finally हमारा updated stock level क्या हो जाएगा? 4 plus 8 which is 12 quantity, right? So हमारा stock level quantity update कर रहे हैं ना हम इस तरीके से। So this is what it mean कि stock good. Huh. So the expected result will be like good receipts it's posted successfully and stock label is updated. Actual result same to be filled after execution, or we can post the screenshot after the successful execution, right? So this is good receipts. Now come to the next. After good receipts क्या करते हैं? After good receipts the invoice का इनवॉइस रिसिप्ट होता है। हमने परचेज ऑर्डर पे हमें वेंडर ने गुड्स दे दिया, अब वेंडर हमें इनवॉइस भी तो देगा ना उस गुड्स का। तो फिर यस वापस से हम टेस्ट केस वी कैन राइट एस P2P, राइट? टेस्ट case 03. What will be the description? Verify the invoice verification process. इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा अभी फॉर व्हाट? फॉर द गुड्स रिसीट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर इट? प्री कंडीशन यही है कि गुड रिसीट्स हमारा पोस्टेड होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही इनवॉइस रिसीट्स हो सकता है। एंड व्हाट विल बी द स्टेप? अगेन द स्टेप विल बी व्हाट? द ट्रांजैक्शन कोड विच इज माइरो, MIRO. And after doing this, what happens? We enter all the necessary detail to verify the vendor invoice. And finally, the invoice will be posted. ठीक है? हो गया? Expected result क्या है? Invoice verified हो गया and posted हो गया successfully. And after the execution has been done properly, we can write it down or share the screenshot of the same. ठीक है? Now the last is what? After invoice receipt, there is payment of invoice, right? Invoice payment. ठीक है? Payment of invoice और invoice payment. ठीक है? तो अब हम इसका भी टेस्ट केस P2P लिख देते हैं। ठीक है? 04 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? वी विल वेरीफाई द पेमेंट प्रोसेसिंग। जो भी इनवॉइस है उसका हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे, राइट? सो वी विल वेरीफाई द पेमेंट प्रोसेस
ठीक है। प्री कंडीशन क्या है कि इनवॉइस हमारा रिसीट होना चाहिए, इनवॉइस शुड बी वेरीफाइड, उसके बाद ही हम ये चीज करेंगे। इससे पहले का जो इनवॉइस हमने अभी वेरीफाई किया उसके बाद का ये स्टेप है कि हम अब इनवॉइस का पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए इसके प्री कंडीशन क्या हुए, यही ना हुए कि द इनवॉइस नीड टू बी वेरीफाइड। नाउ व्हाट विल बी द स्टेप, स्टेप विल बी द ट्रांजैक्शन कोड, वी हैव टू रन द ट्रांजैक्शन कोड F110C। ये भी एक ये जब हम है ना बहुत बल्क में जब इनवॉइसेस को रन करते हैं ना, वी यूज दिस F110. It is nothing but automatic payment program, right? It is done online जो ऑटोमेटिकली ये बल्क इनवॉइसेस का पेमेंट एक साथ कर देता है। और लाइकवाइज अगर सपोज कुछ एक या दो इनवॉइसेस, इसके लिए हम व्हाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ रनिंग एपीपी, हमें अगर हम चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। और मैनुअली का ट्रांजैक्शन कोड है F-43। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बट इन दी सिक्वेंशियल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि आई कैन जस्ट जंप आफ्टर टीचिंग दिस, आई कैन जंप टू एपीपी और वेंडर, नो, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं वेर विच आई हैव टू कवर। सो बट आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज भी आप आफ्टर मेरा पूरे क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एंड I am very much sure. The only thing is that you have to keep practicing, you have to keep revising, and this is the only way where आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे आपके ब्रेन में। ठीक है, एंड एक क्लैरिटी भी रहेगा, आप लॉजिकली भी समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, नाउ या नाउ लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। सो ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, इनवॉइस का पेमेंट कर रहे थे। उसके लिए अगर हमें बल्क में और ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड करना है तो ट्रांजैक्शन कोड F110 है, और अगर हम मैनुअली करते हैं तो F-43 है। ठीक है, इफ वी डू F110 देन देयर इज ए वेज, वहां पे हमें काफी चीजें एंटर करनी पड़ती है, लाइक पैरामीटर, ड्यू डेट, नेक्स्ट रन डेट, ये सब कुछ आप समझोगे जब एक्चुअल में हम इस पे काम करेंगे। एंड फाइनली क्या होगा, वी विल एग्जीक्यूट द पेमेंट रन, फाइनली वी विल एग्जीक्यूट द पेमेंट रन। सो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि अब जब हम बल्क में ऑटोमेटिक पेमेंट कर एपीपी हमने रन किया है थ्रू दिस ट्रांजैक्शन कोड F110, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, राइट, एंड द पेमेंट डॉक्यूमेंट इज फाइनली जनरेटेड। कोई भी चीज अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, देयर इज a generation of a document number, right? So a payment document number will be generated. Got it? And same, we will share the screenshot of the same. So I have tried to explain you in a manner ki how a unit test document or an integration test document will look like. So this is about this two document. Now what is the next document? Huh. The next document is what? It is a user acceptance test. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अब जब सब टेस्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हमने तो कर लिया, तो क्लाइंट को भी तो करना है ना, दे शुड बी अश्योर्ड, आफ्टर ऑल दे विल बी यूजिंग दोस, राइट। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय को टीम मेंबर। को टीम मेंबर कौन है, क्लाइंट के साइड का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो ये जो प्रिपरेशन करेंगे ना वो ही करेंगे, वो क्यों कब करेंगे, जब उन्होंने सब टेस्टिंग कर लिया, दे आर हैप्पी विथ इट, दे आर ओके कि हाँ सब कुछ रन कर रहा है परफेक्टली, तो साइन फाइनली दे विल साइन इट, एंड आफ्टर साइनिंग इट देन ओनली जो भी है एसएपी को लाइव हम उसी के बात करते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब ये भी आप ये भी बोल सकते हो कि अब ये टेस्ट होगा कहाँ, सी बहुत जगह है, या तो ये रिमोटली हो सकता है। रिमोटली का मतलब ये है कि हम एक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप क्रिएट कर ले अपने ही लोकेशन में,
और उनका या एक क्लाउड सर्वर का एक्सेस दे दे एंड क्लाइंट अपनी जगह से ये टेस्टिंग कर सकते हैं। या फिर इधर, बिकॉज क्या होता है ना, ये इतने सारे चीजें होती है एंड टाइम टू टाइम हमें इतना इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो देयर इज ए वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे हम कंसल्टेंट किसी से, अब ऐसा तो नहीं है ना, दिखती देयर इज अ टीम ऑफ 40 to 45 मेंबर्स, तो विल क्या 40 to 45 मेंबर्स कीप ऑन कॉलिंग टू XYZ पर्सन ऑफ द फ्रॉम द क्लाइंट साइड? नो, देयर इज अ पॉइंट कि हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलेंगे या फिर हर मॉड्यूल के जो टीम लीडर्स है वो अपने अपोजिट जो क्लाइंट साइड के जो टीम लीडर है उनसे कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर उनके नीचे जितने भी और लोग हैं, से इफ 40-45 का टीम है, ठीक है, हर मॉड्यूल से एक टीम हेड है, ठीक है, सबके अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम हेड है। तो ये टीम हेड, इनके भी तो को टीम मेंबर के साइड, मतलब क्लाइंट के साइड में भी तो सेम डेजिग्नेशन के कुछ लोग होंगे। तो व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? से फाइनेंस वाला, इनसे एक पर्टिकुलर बंदा होगा क्लाइंट साइड में जिनसे कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? अब जो फाइनेंस का जो टीम लीडर है उसके नीचे जितने बंदे काम कर रहे हैं उनको अगर कोई क्वेरी आएगा, दे विल pass this query to our senior, and then this senior will pass the query to the team leader of client side, ठीक है। तो देयर शुड बी ए वन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम सब तो जाके इनको कॉल, वी ऑल दिस पीपल कांट कॉल दिस पर्सन, राइट? सो हम अपने सीनियर को बोलेंगे एंड सीनियर विल पास द क्वेरी या जो भी कंसर्न है टू द क्लाइंट के जो भी एक दो जिनका भी हमें जो सीनियर हेड पे है जिनसे हमें कम्युनिकेशन करना है कि हमें ये चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए, काइंडली आप प्रोवाइड करवाइए। एंड देन दिस पर्सन अपने क्लीन की अपने वो अपने टीम को बोलेगा एंड दे विल गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो अक्सर क्या होता है ना, जनरली उनके साइड के कुछ मेंबर्स है ना, हमेशा मतलब दे स्टे एट द कंसल्टेंट प्लेस ओनली बिकॉज इतने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, प्लस हमें समझना भी होता है थोड़ा टाइम टू टाइम कि आपको क्या क्या और इनपुट लाइक उनसे हमें इनपुट चाहिए होता है। एंड कभी कभी काफी चीजें डिफरेंसेस वर्कआउट नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते, तो क्या होता है ना, डेली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस टू एंड फ्रो चलते ही रहता है। तो इफ some person at the client side is at our place, which are like if they are at very senior level, so either they can do the testing there itself in at the consultant location, या फिर it also it's possible get on site consultant support can also be given. Like what is this? Where the consultant can travel to the client location with all the necessary hardware and software setup so that they can conduct the user acceptance test, ठीक है। एंड फाइनली once they are okay with it, we get a confirmations through mail or through any sign off तो लेते ही हैं definitely, so that there is a proof कि they have approved it and now we are ready that to install the SAP into their or into the client system. Got it? So this is user acceptance test. User acceptance test document prepared by core team member from client side based on the test carried out by them. If UAT is carried out successfully and client is satisfied with the testing, then we need to take UAT sign off signature. Okay, means client has accepted the mapped process and can be treated as green signal or of going live. So this is user acceptance test. Now training manual is nothing. Training manual यही है कि आप अब जितना हमने जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग किया है, ठीक है, तो वो टेस्टिंग वी हैव टू मेंशन इट समवेयर, राइट? बिकॉज after the SAP went live into the client system, they might need ना manual and configurations documents जहाँ पे उनको रेफरेंस के तौर पे हमें देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो हर बार हमें कॉल करके पूछेंगे कि मेरे से ये पोस्टिंग नहीं हो रहा, आप बताइए कैसे करना है। और we can't create vendor master data, how we have to create? No, everything has been done, you have tested it. अगर आप लोगों को इश्यू आ रहा है, kindly refer to the configurations manual जो हमें उनको सबमिट करना होता है before SAP going live, right? So and training manual definitely it is what जब
And even we have to train the people also. As I told earlier also कि client के कुछ लोगों को हमें train करना पड़ेगा because they are new to this system. So we will pass training to them and then they will pass training to जो जो जिनके और जो remaining और उनके जितने भी employees हैं उनको वो अपना training खुद अपने according दे देंगे ठीक है. So training manual is what a document which is prepared by consultant, and why we prepare it for the end user ठीक है, which consist of all the process related to specific module. इस ट्रेनिंग मैनुअल में FI से मॉड्यूल से रिलेटेड भी सब जितने भी प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी वेज है ऑफ जो भी हमने टेस्टिंग वेस्टिंग किया वो सब कुछ हम लोगों को फाइनली हर डिफरेंट मॉड्यूल्स के फील्ड से एक प्रॉपर तरीके से हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देना होता है विच विल वर्क एज ए मैनुअल फॉर देम राइट. सो this is all about today's class where I have explained you in detail about the unit test document, integration or interlink document. What do we mean by user acceptance test and followed by the training manual. Now there are still few of the documents which yet I have to explain you. So I will be explaining you that in the next classes. So till then, this is for today. Have a good day. Thank you.